Hello everyone, so welcome to our day 77 of our live study with me. It's our day 74 and we are here again for a study for 3 hours. Good morning everyone, have a wonderful day, have a nice day. Just come and we will start our study without wasting our further time. Okay, just come. Till then let me make my setup. Whatever things I have to study today, I have to plan myself, right? फर्स्ट में कुछ करना नहीं है, देखो जैसे हो गया प्रो टू हो गया एन टू हो गया एच एफ एस सी एल एन सी एन। तो जैसे ओ टू होता है ना वैसे हो जाएगा, लाइक दिस नहीं होगा, दिस ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मतलब यही अंतर है, तो उसको करेक्ट करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज है मेरा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम एंड टुडे इज़ द एवरीवन वेलकम टू आवर स्ट्रीम। आप सभी का हमारे स्ट्रीम में स्वागत है यार। ठीक है, थैंक यू विजयस्टिंग सिंह जी, थैंक यू।
भगवान। ओह, जी डायरेक्ट को जी वेलकम टू आवर स्ट्रीम भाई।
कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या होगा ना, देखो सबसे पहले तो हमारा क्या है, सी होगा, से तो O2 की तरह बनेगा, O2 मतलब कि ऐसे होगा, ठीक है। बनाते हैं ऐसे बनेगा, ठीक। तो नीचे होगा ऑब्वियसली, उसके बाद फिर हमारा यहाँ ऐसे बनेगा। इसके लिए दिक्कत है ना कि इसका यहाँ बन जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट है कि इसका सी होगा, बाकी सब कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। पर नॉर्मली कैलकुलेट होगा ऐसे। अच्छा बॉन्ड ऑर्डर सब कुछ 6 4 10 -4, तो ये ऐसे कैलकुलेट होगा नॉर्मली, बट यहाँ पर मेन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है जी, बढ़िया। कॉन्सेप्ट क्लियर ना, कैसे ऑटो को नॉर्मली ऐसे बनता है हमारा ना, सी एन आएगा, प्रोजेक्ट कर देंगे ऐसे, फिर आएगा ही नहीं तो फिर दिक्कत क्या रहने का, ठीक है। लिक्विड क्रिस्टल ठीक है, बस सी एन को ऐसे पैरामैग्नेटिक होगा, ऐसे बनेगा। Now I'm absolutely sure about it. Because me too. That is a liquid crystal. The liquid crystals are a class of soft matter that exhibits properties between solid and liquid, solid और liquid, ठीक है। और यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो यहाँ से वही करता हूँ क्वेश्चन को ना, इसमें हमने सही फिर क्यों कर दिया है, दिक्कत तो ये भी है ना। Liquid crystals are a class of soft matter that exhibits the properties between solid and liquid, solid liquid। अब बात करें इसको तो इसको कुछ ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है। कैसे, ऐसे यूं यूं यूं, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड क्रिस्टल लिक्विड गैस टेम्परेचर। टाइम बहुत कम, बहुत फास्ट करना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स आर टू टाइप्स, थर्मोट्रॉपिक लायोट्रॉपिक। थर्मोट्रॉपिक में निमेटिक सिमेटिक और कॉलिस्ट्रिक, और लायोट्रॉपिक में डिसकॉन्टिन्यूअस हेक्सागोनल लैमेलर, डिसकॉन्टिन्यूअस हेक्सागोनल और लैमेलर, डिसकॉन्टिन्यूअस हेक्सागोनल और लैमेलर, डिसकॉन्टिन्यूअस हेक्सागोनल और लैमेलर, ठीक है। थर्मोट्रॉपिक निमेटिक सिमेट्रिक कॉलिस्ट्रिक और लायोट्रॉपिक, लायोट्रॉपिक में क्या है, एप्लीकेशन डायरेक्ट लिखते हैं बस, कुछ ज़्यादा है नहीं। लायोट्रॉपिक में क्या होता है, लायोट्रॉपिक में आ गया कहाँ के लायोट्रॉपिक के 3 प्रकार होते हैं। दैट इज कौन कौन से, डिसकॉन्टिन्यूअस और लैमेलर, उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते इतना ज़्यादा है, ठीक है। डिसकॉन्टिन्यूअस हेक्सागोनल लैमेलर, डिसकॉन्टिन्यूअस हेक्सागोनल लैमेलर, तो ऑब्वियसली वी डू नॉट कंसिडर इट एज वी कंसिडर दैट, ठीक है। थर्मोट्रॉपिक निमेटिक सिमेट्रिक कॉलिस्टिक, लैमेलर, डिसकॉन्टिन्यूअस हेक्सागोनल, discontinuous hexagonal lamellar, discontinuous hexagonal lamellar. So those liquid crystals depend upon temperature called thermotropic, three types, limetic, symmetric, holistic और pneumatic का, they are thread-like structure and their properties depend upon temperature। pneumatic में they are thread-like structure and their properties depend upon temperature, ठीक है। ओरिएंटेशनल ऑर्डर होता है, इसके पास ओरिएंटेशनल ऑर्डर होता है। pneumatic has orientational order and the symmetric has both and the holistic has nothing, ठीक है। ओरिएंटेशनल बहुत नथिंग, यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो, अगर बात करें हम लोग किसके, निमेटिक की, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ना, पर तिरछा होगा। सिमेट्रिक की बात करें सीधा होगा, सिमेट्रिक की बात करें सीधा होगा। कॉलिस्ट्रिक की बात करें तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। दे हैव लो टेम्परेचर देन सिमेट्रिक की बात करें, दे आर सॉफ्ट लाइक स्ट्रक्चर एंड हैव लोअर टेम्परेचर देन निमेटिक। सिमेट्रिक की बात करें, दे
they have they are soap like structure, and have lower temperature than pneumatic. ठीक है, they are soap like structure and they have lower temperature than pneumatic. are soap like structure and they have lower temperature than pneumatic. ठीक है, सोप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लोअर टेम्परेचर होता है देन न्यूमेटिक से. ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का मतलब पोजिशन और ये लिख के ख़त्म कर देंगे. ठीक है, दिस डायरेक्टर एक्सेस एंड ऐसे लिख देंगे. ठीक है, कोलेस्ट्रिक हो गया खत्म. लाइट्रोपिक होता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंस सॉल्वेंट ऑफ विच वन इज पोलर. इट इज मिक्सड बाय it is prepared by mixing of two or more than two solvent and of which one is polar. It is prepared by mixing of two or more substance of which one is polar. It is prepared by mixing of two or more substance of which one is polar. It is prepared by mixing of two or more oil and water. ना soap and oil and water को liquid भी कह सकते हैं. It is prepared by the mixture of two or more substance of which one is polar. It is prepared by mixing of two or more substance of which one is polar. Discontinuous hexagonal lamellar. Discontinuous hexagonal lamellar. एप्लीकेशन बात करें तो इट इज़ यूज इन स्मार्ट टेलीविजन एज एलसीडी. ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है ना, तो इट इज़ यूज इन स्मार्ट टेलीविजन एज एलसीडी, दैट इज एज अ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. ठीक है, दूसरा है इट इज़ यूज इन लिक्विड थर्मोमीटर. इट इज़ यूज इन liquid thermometer and the color reflected is a it is used in liquid thermometer and the color reflected is a color reflected depend upon the temperature. ठीक है, used in liquid crystal thermometer, and the color reflected depend upon the temperature. Used in liquid crystal thermometer and the color reflected depend upon the temperature. Used in liquid crystal thermometer, the color reflected depend upon the temperature. It is also used in mood rings, and in terms of medicine, it is used to predict cancer. In terms of medicine, it is used to predict cancer, and it is used in mood rings. It is used in smart televisions as LCD, and it is used in thermometer, and the color reflected is the temperature of the body. Used in liquid crystal thermometer, and the color reflected depend upon the temperature. Used in liquid crystal thermometer, the color reflected depend upon the temperature. Okay. Answer number 3. Answer number 3 is that there are total 12 principles of green chemistry that are as follows. वैसे तो क्वेश्चन आएगा ना तो पूरा मतलब 12 सब पूछ लेगा. ठीक है, 12 principles of green chemistry. ठीक है, देखो द 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री आर एज फॉलोज. पहला प्रिवेंशन, दूसरा एटॉमिक इकोनॉमी, तीसरा लेस हार्डर्स केमिकल सिंथेसिस. ठीक है, चौथा डिजाइनिंग सेफर केमिकल्स, और पांचवा है यूजिंग सेफर सॉल्वेंट्स एंड ऑक्सिलरीज. ठीक है, ठीक है. तो पहला प्रिवेंशन, दूसरा आइटम इकोनॉमी. पहला प्रिवेंशन, दूसरा आइटम इकोनॉमी, तीसरा लेस हाजार्डस केमिकल सिंथेसिस, चौथा डिजाइनिंग सेफर केमिकल्स, पांचवा है यूजिंग सेफर सॉल्वेंट्स एंड ऑक्सिलरीज, और छठवां है डिजाइनिंग एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेस, और सातवां है रिन्यूएबल फीड स्टॉक्स, आठवां है रिड्यूस डेरिवेटिव्स, और नौवां है यूजिंग कैटलिस्ट डिजाइन एंड डिग्रेडेशन रियल टाइम एनालिसिस इनहेरेंट सेफर केमिकल्स. ठीक है, दीज आर द 12 principles of green chemistry. Prevention, atomic economy, less hazardous chemical synthesis, designing safer chemicals, using safer solvents and auxiliaries, designing energy efficient process, renewable feedstocks, reduce derivatives, using catalyst,
design and degradation, real-time analysis, inherent safer chemicals. This and catalyst, design and degradation, real-time analysis, designing energy efficient process, using solid and auxiliaries, designing safer chemicals, prevention, atomic economy, less hazardous chemical synthesis, renewable feedstock, reduce derivative, using catalyst, design and degradation, using catalyst. हम्म, ठीक है। ठीक है, बढ़िया, मैं लिख लूँगा यार, लिख लूँगा, मुझे पता है, उसमें मुझे आता जाएगा तो मुझे दिक्कत नहीं है। प्रिवेंशन, एटम इकोनॉमी, लेस hazardous chemical synthesis तो याद ही आएगा। यूजिंग कैटलिस्ट, सेफर यूजिंग कैटलिस्ट हो गया, रिन्यूएबल फीड स्टॉक्स हो गए, और रिड्यूस डेरिवेटिव्स हो गया, और इनहेरेंट इनहेरेंट सेफर केमिकल्स हो गए, रियल टाइम एनालिसिस हो गया। या तो मतलब इतनी सारी चीज़ें बहुत हैं, ठीक है। नाउ ग्रीन सिंथेसिस मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ पैरासीटामोल, ठीक है। ठीक है, yes, so the green synthesis method for the preparation of paracetamol। सबसे पहले इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। प्रोसेस तो तुम बना लोगे, बट हाँ मतलब तुम्हें स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए ना। पैरासीटामोल और एडिपिक एसिड, देखो पैरासीटामोल का जो होता है स्ट्रक्चर कैसे होता है, पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर होता है कैसे होता है, कुछ ऐसा होता है। बेकमैन सब्स्टिट्यूशन नहीं कर पाओगे, तुम्हें स्ट्रक्चर ना पता रहे तो, ठीक है। या तो स्ट्रक्चर पता पता करके रखो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जस्ट पता करके रखो भाई। देखो तो देखो, ओ एच, एन डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ से टूट के यहाँ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अच्छा यार बस, ठीक है। पैरासीटामोल क्या होगा, एक फिनॉल ले लेना, सिंगल बॉन्ड NH, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसे हो जाएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NH, C डबल बॉन्ड CH3 पैरासीटामोल। एडिपिक एसिड की बात करते हैं अगर हम लोग, एडिपिक एसिड तो ऐसा कुछ होगा, COOH, COOH, जैसे COOH, CH3, CH2, 4 एंड COOH, ऐसा होता है, ठीक है। ये तो दोनों को लिखना और इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट स्टेप होता है एसिटाइलेशन ऑफ फिनॉल। क्या होता है पहला स्टेप, एसिटाइलेशन ऑफ फिनॉल। ऑब्वियसली मैंने फिनॉल को लिया, फिनॉल का एसिटाइलेशन करना है। एसिटाइलेशन बोले तो हो गया एसिटाइलेशन, CH3 COCl ना, कुछ ऐसे। बिल्कुल भाई, एसिटाइलेशन ऑफ फिनॉल ले लिया, फिनॉल प्लस में एसिटिक एनहाइड्राइड से करा, C डबल बॉन्ड ऑफ CH3, C डबल बॉन्ड ऑफ CH3। एसिटाइलेशन ऑफ फिनॉल कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ HF के प्रेजेंस में रहेगा। अच्छा, HF के प्रेजेंस में रहेगा तो क्या हो जाएगा हमारा, हमारा यहाँ पे बहुत सिंपल है, एक बाहर निकल जाएगा, एक बाहर निकल के हमारा यहाँ पर ऐसा लग जाएगा, जैसे OH, ये 3CO, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये जब यहाँ से निकले तुम्हारे यहाँ लग गया C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक। हम देखो, ये मेरा बन गया, जो कुछ बन गया हमारा, इसका नाम है 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ठीक है। इसका नाम है 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ठीक है। 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, सिंपल हम लोग 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन को फिर से ले लेंगे, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3, नाउ
एसिटाइलेशन या फिर जो कुछ भी है, हम लोग क्या करेंगे इसके रिएक्शन विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा पता होगा ना, तो मतलब कर सकते हैं। रिएक्शन विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। रिएक्शन विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसलिए NH3OH का NH2OH का रिएक्शन कराएंगे, NH2OH का रिएक्शन कराएंगे तो बस ये हमारा अलग हो जाएगा, तुम्हारा बना देगा यहाँ पर M-H2O हो जाएगा। तुम्हारा क्या बना देगा, हमारा बना देगा यहाँ पर OH हो गया, C डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड OH, क्या बना देगा हमारा, ये निकल गया C C H2O निकला। तो हमारे यहाँ पर बना देगा तो CH3 तो यहाँ रहेगा ही, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड OH बना देगा, कीटोक्साइम हो गया, कीटोक्साइम हो गया, ठीक है। अब इसलिए अब यहाँ पर आने के बाद बेकमैन सब्स्टिट्यूशन लगेगा, ठीक है जी। यहाँ पर आने के बाद हमारा लगेगा क्या, बेकमैन सब्स्टिट्यूशन। हम देखो बेकमैन सब्स्टिट्यूशन लगेगा तो बेकमैन सब्स्टिट्यूशन से पहले क्या होगा, बॉन्ड ऑन तोड़ो। अब इसलिए और क्या करोगे बेकमैन सब्स्टिट्यूशन में, बेकमैन सब्स्टिट्यूशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ CH3 COOH, CH3 लिख दो बस, CH3 लिख दी बस, ठीक है। अब बेकमैन सब्स्टिट्यूशन में क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या करोगे कि बेकमैन सब्स्टिट्यूशन से पहले करोगे यहाँ पर नाइट्रोजन को यहाँ लगा रख दोगे, OH है या डबल बॉन्ड C, ऐसे कर दो NOH, तो ऐसे रह क्या N डबल बॉन्ड C जो कि 3 कंप्लीट है, इसका हो जाएगा यहाँ पर जाएगा CH3, इसका हो जाएगा OH, ठीक है। हाँ N डबल बॉन्ड C कर दो, C डबल बॉन्ड N है ना, तो हमारा N डबल बॉन्ड C कर दो, क्या कर दो N डबल बॉन्ड C कर दो। N डबल बॉन्ड C होगा, इसलिए A भी टूटेगा, जब A टूटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा NH C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारा बन जाएगा क्या, हमारा बन जाएगा हमारा पैरासीटामोल। तो या इसमें जो ध्यान देने वाली चीज़ें हैं उसमें अलग है, कुछ थोड़ा सा अलग है। पहला क्या पैरासीटामोल में बात करें, पहला एसिटाइलेशन ऑफ फिनॉल, एसिटाइलेशन ऑफ फिनॉल में हमारा रहेगा क्या रहेगा, ऐसे रहेगा CH3 C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऐसे रहेगा RCO, ऐसे क्या है पहला स्टेप नंबर 2। अच्छा स्टेप नंबर 2 इसमें रिएक्शन क्या चाहिए, HF बने क्या 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन, 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन बनेगा, ठीक है। 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन, ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन बनेगा। स्टेप नंबर 2 की बात करें, सर रिएक्शन विद एमोनियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन विद एमोनियम हाइड्रोक्साइड जैसे कि NH2OH रिएक्शन करा देंगे हम लोग, क्या होगा -H2 हो जाएगा, वहाँ बन जाएगा क्या, बन जाएगा हमारा कीटोक्साइम बन जाएगा, कीटोक्साइम बन जाएगा। फिर तीसरा स्टेप ऑब्वियसली बेकमैन सब्स्टिट्यूशन, ठीक है।
तीसरा स्टेप बेगमन सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, पहले इसको लिख देंगे हम लोग को। देखो क्या करेंगे, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड एन को एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन को कर देंगे एन डबल बॉन्ड सी से। प्रेस करने के बाद थोड़ा बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करना बहुत ही आसान है। तो हम लोग सी डबल बॉन्ड कर देंगे, पैरासीटामोल बन जाएगा एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड पहले एडिपिक एसिड में सबसे पहले एडिपिक एसिड ठीक है। एडिपिक एसिड में क्या सबसे पहले स्टेप में फर्स्ट रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को देखो, सॉरी हाँ यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये तो सब कुछ ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे होगा। यहाँ पर OH ये सब तो खुद ये ध्यान देना पड़ेगा ना। OH ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ ई कोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंस होगा तो क्या हो जाएगा, देखो तो इसको तो नहीं इसको हट जाएगा ना, बिल्कुल हट जाएगा। अब देखो नॉर्मल बेंजीन बना लो। बेंजीन बनाने के बाद देखो क्या होगा, नॉर्मल बेंजीन बना लो। बेंजीन बनाने के बाद देखो ये भी हो जाएगा कि हमारा 2H गायब हो जाएगा। जो हो जाएगा 2H गायब हो जाएगा। और हमें ये भी पता है ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से 3D हाइड्रोसिकमेट बन जाएगा। 3D हाइड्रोसिकमेट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो COH देखो कैसे, सबसे पहले यार बनाना देखो इधर खत्म हो जाएगा, 2OH बचा रहेगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन भी इधर आएगा, इधर तो डबल बॉन्ड बना देगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना देगा, छोड़ के यहाँ पर भी COH ऐसा कुछ कर देगा, ठीक है। ध्यान से देखो यार, ग्लूकोज है। ठीक है, राइट, ऐसे आएगा। इसको याद कर लो, कुछ एक यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ बन जाएगा, OH COH, ठीक है। रिडक्शन ऑफ 3D हाइड्रोसिकमेट स्टेप नंबर 2 में ही है, रिडक्शन ऑफ 3D हाइड्रोसिकमेट जो कुछ भी है, ठीक है। तो इसमें देखो उसको ले लेंगे अब, इसलिए COH, ठीक है। फिर से ई कोलाई बैक्टीरिया का रिएक्शन करेगा, तो हमारा बना देगा दिस, दैट इज COH, ठीक है। COH ऐसे बना देगा। मैं कहेंगे सिस म्यूकोनिक एसिड, देखो सिस म्यूकोनिक एसिड में इसका जो रिएक्शन करा देंगे हम लोग, तीसरा असले रिडक्शन ऑफ सिस म्यूकोनिक एसिड कराएंगे तो इसलिए COH और प्रेजेंस ऑफ H2 और प्लेटिनम प्रेजेंस में कराएंगे तो हमारा मछली बन जाएगा ये, ठीक है। एडिपिक एसिड हट जाएगा, एडिपिक एसिड COOH, ठीक है। कहीं
अगर तू रुका तो मंजिल पाएगा ना फिर, कदम कदम बढ़ाए। थ्री हेड से क्यों है, ठीक है। सिस्टम में कौन कैसे और अडबी कैसे यहाँ बन जाएगा, बढ़िया। ये तो ध्यान देने वाली बात है ना, ये तो डबल बॉन्ड थोड़ी रहेगा। एंड बेसिक ग्रीन संतोष में 30 में करता हूँ, ज़्यादा कुछ दिमाग में लगा थोड़ी। हैशटैग प्लेटिनम हाइड्रोजन प्लेटिनम दे दीजिए, बढ़िया। रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज कैसे बनता है पता है ना, ग्लूकोज तो कैसे बनता है पता है ना। ग्लूकोज जो हमारा बनता है वो कुछ ऐसे बनता है, वैसे बनता है उसे देखो, ऑक्सीजन, ठीक है, ओ एच ओ एच ओ एच ओ एच ओ एच, तो ई को लाइव एक्सट्रैक्शन करेगा, बना देगा, पहले नंबर से पकड़ दो, सी ओ ओ एच, यूं यूं, डबल बॉन्ड हो जाएगा, ओ एच ओ एच, बस ओ एच ऐसा बनेगा, इसमें 3D हाइड्रोक्सीमेट, 3D हाइड्रोक्सीमेट, 3D हाइड्रोक्सीमेट का रिडक्शन होगा, तुम्हारा बन जाएगा सिंपल स्टेसिस में कॉन्सियस में कौन कैसे इकोलाई बैक्टीरिया इसमें भी रहेगा, क्या रहेगा रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज में, देखते हैं तुम्हारा रहेगा इकोलाई बैक्टीरिया, और ऐसे कुछ रहेगा। यहाँ पर सी एच मतलब सी एच नहीं ओ एच रहेगा भाई ना, 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ ओ एच रहेगा, ऐसा जगह कौन सी हमारा, ठीक है। दिस इज डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज, ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ इकोलाई बैक्टीरिया, तो हमारा बन जाएगा 3D हाइड्रोक्सीमेट, 3D हाइड्रोक्सीमेट बन जाएगा। 3D हाइड्रोक्सीमेट कैसे बनेगा पता ही होगा, यहाँ पर ऐसे बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, CH बन जाएगा, ठीक है, सब पता होना चाहिए। अब 3D हाइड्रोक्सीमेट का बनेगा तो तुम्हारा हो जाएगा 3D हाइड्रोक्सीमेट का जब बनेगा तो प्रेजेंस ऑफ इकोलाई तुम्हारा बन जाएगा सिस मेकोनिक एसिड, सिस मेकोनिक एसिड, देखो सिस मेकोनिक एसिड। अब हमारे थर्ड स्टेप जो कि लास्ट स्टेप है, सिस मेकोनिक एसिड का जब होगा, इसके होगा H2 या फिर प्लेटिनम, H2 या फिर प्लेटिनम, ठीक है। इसके होगा H2 प्लेटिनम, H2 प्लेटिनम, H2 एंड प्लेटिनम जो कुछ, ठीक है। H2 एंड प्लेटिनम के साथ जब रिएक्शन में करेगा तो हमारा बन जाएगा हमारा क्या, एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड, ठीक है। तो एडिपिक एसिड बनाने का प्रोसेस है, ठीक है। क्वेश्चन 4 एंड दैट इज ग्रेफाइट। देखो एक होता है ग्रेफाइट और एक होता है हमारा फ्लोरीन, ठीक है। तो ग्रेफाइट की बात करते हैं सबसे पहले हम लोग, ग्रेफाइट फ्लोरीन उधर फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर में होता है, बट ग्रेफाइट नहीं होता है, ग्रेफाइट को ध्यान देना पड़ेगा। ग्रेफाइट कुछ ऐसा ट्रंकेटेड आइगोसाइड्रॉन भी नहीं होता है, ग्रेफाइट थोड़ा अलग होता है, ग्रेफाइट को ध्यान दो भाई, ग्रेफाइट को ध्यान दो, ठीक है। तो 58 मिनट हो गए,
ग्रेफाइट 1.41 एंगस्ट्रॉम, 1.41 एंगस्ट्रॉम इधर डिस्टेंस होती है, 3.34 एंगस्ट्रॉम इधर डिस्टेंस होती है। वीक वन डबल फोर्स से कनेक्टेड होता है, ठीक, वीक वन डबल फोर्स से कनेक्टेड होता है, ठीक है। कैसे देखो, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में देखो क्या होगा, ग्रेफाइट में हमारा ऐसे, फिर बदले फिर ऐसे, जो कुछ भी भाई, इसके बाद फिर ऐसा नहीं होगा, मतलब ऑब्वियसली ऐसे नहीं होगा, ऐसे बनेगा ही नहीं होगा, फिर ऐसे बना दो ना, ऐसे बना दिए, इसके बाद फिर ऐसे बना दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे हम लोग कर देंगे, तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली चीज़ है, दैट इज दिस इज 1.41 एंगस्ट्रॉम, दिस इज, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स इज 3.34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। distance between the layers is distance between the layers is 1.41 angstrom, and distance between the layers is 3.34 angstrom, and distance and length of an, ठीक है, बेंजीन जो कुछ भी है उसकी जो लेंथ है 1.41 एंगस्ट्रॉम बनेगी। और ऑब्वियसली बी वन डबल फोर से कनेक्टेड होता है, बी वन डबल फोर से, ग्रेफाइट इज द सेकंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन। सबसे पहले ग्रेफाइट इज द सेकंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन, इट अरेंज्ड इन लेयर्स, नेचुरली अकरिंग एंड मैन मेड, इट कैन बी नेचुरली अकरिंग भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है, ठीक है। इट इज हेक्सागोनल, इट इज हेक्सागोनल, इट इज हेक्सागोनल, क्या, इट इज हेक्सागोनल इन शेप, each carbon is attached to three carbon atoms, leaving the fourth electron loose, ठीक है। each carbon atom is attached to the each carbon atom is attached to three carbon atoms and leaving the fourth electron free, ठीक है। कार्बन आर sp2 hybridized, कार्बन आर sp2 hybridized, कार्बन आर sp2 hybridized और strongly bonded by sigma bond, they are strongly bonded by sigma bond, ठीक है, strongly bonded by sigma bond strongly bonded by sigma bond, ठीक है, they are strongly bonded by sigma bond, and कार्बन सारे sp2 हमारे strong bond sigma bond angle 120 डिग्री, बॉन्ड एंगल जो है 120 डिग्री का होगा, और द लेयर्स आर हेल्ड बाय बी इक्वल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मेकिंग ग्रेफाइट सॉफ्ट मटेरियल, soft substance which results in a lubricating property. The melting point of graphite is very high, which is due to strong covalent bond. The melting point of this, okay, the melting point of graphite is very high, which is because of a strong covalent bond, because of strong covalent bond, because of strong covalent bond. So the melting point of graphite is very high because of the strong covalent bond. And application बात करें तो पेंसिल सबको पता है, यूज फॉर वाटर प्योरिफिकेशन इन आर ओ सिस्टम, यूज फॉर वाटर प्योरिफिकेशन इन आर ओ सिस्टम, ठीक है। एप्लीकेशन बात करें तो पहला बताने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा है आर ओ सिस्टम, ठीक है, यूज फॉर वाटर प्योरिफिकेशन इन आर ओ सिस्टम, जैसा ड्रग डिलीवरी लुब्रिकेशन, तो चौथा, ठीक है, इसलिए मॉडरेटर, मॉडरेटर, ठीक है, मॉडरेटर, मॉडरेटर के लिए यूज होता है, जो मॉडरेटर एज ए पेंसिल, पेंसिल में यूज होता है। तो एप्लीकेशन की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एज इट हैव हाई स्ट्रेंथ एंड केमिकल स्टेबिलिटी, it is a good conductor of heat and electricity as it have a high strength and chemical stability, ठीक है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बात करें, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज it have high strength and chemical stability, it have high strength and chemical stability, it have a high strength and chemical stability, ठीक है। Yeah, so pencil used for water purification, narrow system lubrication, regular moderator. Electrical property का that is going to conductor of heat and electricity as it have a high strength and chemical stability. Lubricating property की बात किया जाए
So the layers are held by weak one force of interaction making graphite a soft substance results in liquid property. ठीक है, the layers are held by weak one force of interaction making graphite a soft material substance which results in its lubricating property. ठीक है, ठीक है। अब देखो application बात करें, पेंसिल यूज होता है, सबको पता है। इट इज गुड कंडक्टर, इट हैव हाई स्ट्रेंथ एंड केमिकल स्टेबिलिटी, एज इट हैव हाई स्ट्रेंथ एंड केमिकल स्टेबिलिटी, और it is a hexagonal in shape. It is the bond angle between the layers. The bond angle is 120 degree, strongly covalent, strongly bonded with sigma bond, strongly bonded with sigma bond. ठीक है, by sigma bond melting point is high because of the strong covalent bond. Its melting point is very high because of the strong covalent bond. Graphite second element of carbon later in layers and second man-made. ठीक है, can be naturally occurring and man-made, can naturally occurring and man-made hexagonal shape में होता है, और each carbon atom is attached to the three carbon atom leaving the fourth electron free. Carbons are sp2 hybridized strongly covalent by single bond angle ठीक है, sp2 hybridized होता है, और strongly bonded by sigma bond angle of 120 degree होता है। चलिए सर भाई वी फोर्स ठीक है, 3.34 and 1.41, 3.34 and 1.41, 3.34 and 1.41, ठीक है, 1.4 इधर हो, 3.34 इधर हो जाएगा, 3.4 पहले ऐसे बनाएंगे फिर ऐसे बना देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखो बढ़िया। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फुलरीन। फुलरीन के बाद आ गया ना, बस वन सेकेंड, फुलरीन। तो स्ट्रक्चर ऑफ फुलरीन, स्ट्रक्चर ऑफ फुलरीन बात करते करें तो कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा फास्फोरस, फिर हमारा ये 6 ठो, ठीक, क्या हो जाएगा हमारा, ये 6 ठो हो जाएगा हमारा, ये हमारा 6 हो जाएगा, हमारा हेक्सागोनल शेप हो जाएगा जो कुछ भी है। ठीक है, तो हम लोग बैलेंस करेंगे, उसकी दिक्कत है मुझे। ठीक है, ठीक है, बस एक में तो एक ही रहेगा खत्म। ठीक है, दिस इज देखो ट्रंकेटेड आइगोसाइड्रोन, इसको तुमको मतलब पता है भाई अच्छे से। ठीक है, C60 कहते हैं, जैसे बकी बॉल भी कहते हैं, C60 बकी बॉल, C60 बकी बॉल। ठीक है, 60 indicate number of carbon, 60 indicates the number of carbon. C60 consists of 60 carbon atoms arranged in pentagon. 6 carbon atoms arranged. C60 consists of 60 carbon atoms. C60 consists of 60 carbon atoms arranged in a pentagon and hexagon alternatively. ठीक है, C60 consists of 60 carbon atom arranged in pentagonal and hexagonal alternatively. ठीक है, similar to a football. ठीक है, C60 consists of 60 carbon atoms arranged in pentagon and hexagon alternatively similar to a football. ठीक है, C60 consists of 60 carbon atoms 60 carbon atoms arranged in pentagon and hexagon alternatively similar to a football. C60 consists of 60 carbon atoms. C60 consists of 60 carbon atoms arranged in a pentagon and hexagon alternatively similar to a football. ठीक है, C60 consists of 60 carbon atoms. C60 consists of 60 carbon atoms. C60 consists of 60 carbon atoms. C60 consists of 16 carbon atoms arranged in pentagonal and hexagonal alternatively. ठीक है,
Say 60 consists of 60 carbon atoms arranged in pentagonal and hexagonal alternatively, similar to a football. The presence of a pentagon prevents A from B. The presence of a pentagon prevents A from B to become planar. Yeah. The presence of a pentagon prevents A from B to become planar. It is also called a truncated icosahedron. It has 12 pentagon. It has 12 pentagon, 20 hexagon, or 60 vertices and 90 edges. Yeah. It has 12 pentagon, 20 hexagon, or 60 vertices and 60 vertices on 90 edges. ठीक है. Preparation का था, it is prepared by electric arc method while vaporizing graphite rod under inert atmosphere. It is prepared by, ठीक है. कुछ यहाँ पर देख लिया, जैसे यहाँ देखो क्या होगा, C60 हो गया, C60 हो गया, ठीक है. इसे बकी बॉल कहते हैं. क्या कहते हैं? बकी बॉल कहते हैं. बकी बॉल कहते हैं. C60 को हम लोग बकी बॉल कहते हैं. C60 consists of 60 carbon atoms arranged in pentagon and hexagon alternatively, similar to a football. ठीक है. ठीक है. The presence of pentagon prevents A from B to become planar. ठीक है. The presence of a pentagon, ठीक है. The presence of a pentagon the presence of a pentagon prevents A from B to become planar, and it is also known as truncated icosahedron. C60 consists of carbon atom and pentagon. C60 consists of 60 carbon atoms arranged in pentagon and hexagon alternatively, similar to a football. ठीक है. C60 consists of 60 carbon atoms arranged in pentagon and hexagon alternatively, similar to a football. ठीक है. Obviously, it has 12 pentagon, 20 hexagon, 60 edges and 60 vertices, 90 edges, सबको पता है. ठीक है. प्रिपरेशन की बात करते हैं हम लोग. प्रिपरेशन क्या होता है बताएं. It is prepared by electric arc method. While vaporizing graphite rod into an inert atmosphere. It is prepared by electric arc method. While vaporizing, it is prepared by electric arc method while vaporizing graphite rod under inert atmosphere. Vaporizing graphite rod under inert atmosphere. ठीक है. It is prepared by electric arc method. जी संदीप कुमार गौतम जी, हाय. It is prepared by electric arc method while vaporizing graphite under inert atmosphere. It is prepared by electric arc method while vaporizing graphite rod into inert atmosphere. Graphite rod under inert atmosphere. ठीक है. Application as a lubricant. ठीक है. एज ए लुब्रिकेंट, ड्रग डिलीवरी, 2 एप्लीकेशन सबसे पहले हो जाएगा. और तीसरा एप्लीकेशन की बात करें हम लोग इसकी, तो क्या हो जाएगा? एज ए कनेक्टर. अच्छा, एज ए कनेक्टर यूज होता है. क्या होता है? एज ए कनेक्टर यूज होता है. हम लोग एज ए कनेक्टर यूज़ कर सकते हैं इसका. और दूसरा है एज ए कनेक्टर यूज़ कर सकते हैं. ड्रग डिलीवरी ऑब्वियसली. फोटो लिमिटर भी यूज़ कर सकते हैं. फोटो लिमिटर. ठीक है. एज ए फोटो लिमिटर यूज हो सकता है. और दोनों तुम्हें पता है, एज अ कनेक्टर एज अ फोटो लिमिटर यूज कर सकते हैं. चलो प्रॉपर्टीज़ में बात करें तो इट इज ए मस्टर्ड येलो इन कलर. ठीक है. प्रॉपर्टीज़ में बात करें तो इट इज मस्टर्ड येलो इन कलर. The color changes to black when thickness is increased. It can act as a superconductor. It shows paramagnetic properties.
It is mustard yellow in color. It is mustard yellow in color. ठीक है. It is mustard yellow in color. It is mustard yellow in color. Mustard yellow in color. It is mustard yellow in color. The color changes to black. The color changes to black and thickness is increased. The color changes to black and thickness is increased. Okay, the color changes to black when thickness is increased. It can act as a superconductor. And चौथा है it shows ferromagnetic properties. It shows ferromagnetic properties. It shows ferromagnetic properties and it is a superconductor. It is mustard yellow in color. ठीक है. The color changes to black and the thickness is increased. ठीक है. रुका तो मंजिल पाएगा ना फिर कदम कदम बढ़ाए जा रखे हौसला कर फैसला तुझे वक्त बदलना है रुकना तो बन गया रुकना तो बन गया पे चल गया से मैगजीन तक गया यूनिट हम लोग यहाँ से बात करते हैं फिर नंबर 2 ठीक है यूनिट नंबर 2 में सबसे पहला आता है यूनिट 2 इन्वेस्टिगाइज्ड यूनिट नंबर 2 पहला था लैम्बर्ट बियर्स ला तो लैम्बर्ट बियर्स ला क्या कहता है ए इज इक्वल टू सी एल होता है क्या होता है ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल ठीक है ए इज इक्वल टू के सी एल ऐसे कर सकते के सी एल ठीक है कह सकते मतलब फॉर जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग वी कैन से दैट लैम्बर्ट बियर्स ला ठीक है लैम्बर्ट बियर्स ला तो it is the linear relationship between absorbance and concentration of absorbing species. So it is a linear relationship between the concentration between the absorbance and the concentration of absorbing species. It is the linear relationship between the absorbance and the concentration of absorbing species. ठीक है पढ़ते हैं थोड़ा फास्ट देखो लैम्बर्ट बियर्स ला क्या था लैम्बर्ट बियर्स ला बोलते हैं इट इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द एब्जॉर्बेंस एंड द कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग स्पीसीज it is the linear relationship between the absorbance and the concentration of absorbing species it is the linear relationship between the absorbance and the concentration of absorbing species according to this law when a beam of monochromatic light is passed through absorbing substance according to this law when a beam of monochromatic light is passed through when a beam of monochromatic light is passed through absorbing substance ठीक है when a beam of monochromatic light is passed through absorbing substances the rate of degrees of intensity of radiation with thickness of the
absorbing solution is proportional to the intensity of a incident radiation as well as the concentration of the solution. क्या खतरनाक definition है यार. देखो, it is according to this law है ना. beam of monochromatic light is passed through the absorbing substances. ठीक है. When a beam of monochromatic light is passed through the absorbing substances, the rate of decrease in the intensity of a the rate of decrease in the intensity of a light, the rate of decrease in the rate of decrease of intensity of radiation with the thickness of the absorbing solution. The rate of decrease of intensity of the rate of decrease of the intensity of the radiation with the thickness of absorbing solution. The rate of decrease of the rate of decrease of intensity of radiation, the rate of decrease of intensity of radiation with the thickness of absorbing solution is proportional to the intensity of incident radiation proportional to the intensity of incident radiation as well as the concentration of the solution. ठीक है. लैम्बर्ट बियर लॉ. लैम्बर्ट बियर्स लॉ में यही है. डी ऑफ डी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई सी. अब ई सी एल हो जाएगा, बात अलग की बात हम लोग कर लेंगे. सही है. हाँ, दिस इज इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन. Intensity of radiation. This is thickness of absorbing solution. Thickness of absorbing solution. Thickness of absorbing solution. Thickness of absorbing solution. This is incident radiation. This is concentration of the solution. This is concentration of the solution. The concentration of the solution. This is Lambert-Beer's law. ठीक है. The rate of decrease of intensity of radiation. The rate of decrease of intensity. The rate of decrease of intensity of the radiation with the thickness of the absorbing solution. The rate of decrease of intensity of radiation. The rate of decrease of intensity of radiation with the thickness of the absorbing solution is proportional to the intensity of incident radiation, the concentration of the solution, as well as the concentration of the solution. ठीक है. The rate of decrease of intensity of radiation with respect to the concentration of absorbing species. The rate of decrease of intensity of radiation. The rate of decrease of intensity of radiation with respect to the with the thickness of the absorbing solution. The rate of decrease of intensity of radiation with the thickness of the absorbing solution is directly proportional to the intensity of incident radiation and the concentration of the solution. Is directly proportional to the intensity of the incident radiation, the concentration of the solution. ठीक है. देखो यहाँ पर आई नॉट जाएगा, इसलिए आई बाहर निकलेगा. यहाँ पर कुछ होगा ना. दिस इज द पाथ लेंथ बी. ठीक है. absorbing sample of absorbing sample, this can say absorbing sample of concentration C. ठीक है. C concentration का भी absorbing solution absorbing sample है. ठीक है. Lambert-Beer's law होता है. Lambert-Beer's law होता है. It is a linear relationship between the absorbance and the concentration concentration of absorbing species. ठीक है. It is a linear relationship between the absorbance and the concentration of absorbing species. According to this law, when a beam of monochromatic light is passed through the absorbing solution, a substance, when a beam of monochromatic light is passed through the concentration of absorbing substance, when a beam of monochromatic light is passed through the concentration of absorbing substance, the rate of decrease of intensity of incident radiation with the thickness of the absorbing solution is proportional to the intensity of incident radiation and क्या होता है ECL and the concentration of absorbing
सब्सटेंस जो कुछ होगा, एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। देखो, द रेट ऑफ डिग्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन with the thickness of the observing solution proportional to the intensity of incident radiation and the concentration as well as the concentration of solution. दिस इज आई नॉट आएगा, आई बाहर निकलेगा एंड दिस हो जाएगा, ठीक है। और हमें इसे फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। के इज अ मोलर एब्जॉर्प्शन, मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, के इज अ मोलर एब्जॉर्बिंग कोएफिशिएंट, के इज अ मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, ठीक है। फिर के इज अ मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, ठीक है। के इज अ मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, भाई के इज अ मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, फिर के इज अ मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, फिर के इज अ मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें, कहाँ से कहाँ तक, आई नॉट से आई तक, और इसे 0 से एल तक, फिर कहाँ तक करना पड़ेगा, 0 से एल तक। ठीक है, 0 से एल तक, ठीक है। तो देखो 1/i नॉट या फिर 1/i जो कुछ भी है ना, इसे क्या हो जाएगा, ln i और आई नॉट, तो ln i/i नॉट इज इक्वल टू माइनस में k-c-l, तो ln i/i नॉट दैट इज 2.303 इंटू लॉग i/i नॉट दैट इज माइनस k-cl हो जाएगा, लॉग i/i नॉट इज इक्वल टू k-cl हो जाएगा, लॉग i/i नॉट इज इक्वल टू ए ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू साइलेंट होता है, तो ए ले लेंगे तो ए सी ए हो जाएगा हमारा साइलेंस मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, और सी एल तो वहाँ बन गया, ठीक है। बन गया, बढ़िया, आसानी से बन गया ना। कहीं अगर तू रुका तो मंजिल पाएगा ना, फिर कदम कदम लाए जा, गगन गगन ठाए के फासला कर, वक्त बदलना है। ओके,
तो दिस वाज द लैम्बर्ट बियर्स लॉ। लैम्बर्ट बियर्स लॉ प्रॉपर ना आसान है, ख़त्म हो गया। दूसरा है कायरल ड्रग्स। कायरल ड्रग्स क्या होता है? देखो सबसे पहले कायरल कार्बन क्या होता है? कायरल कार्बन होता है कि जिससे कि 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स लगे होते हैं, उसे कायरल कार्बन कहते हैं। ठीक है, कायरल ड्रग्स क्या होता है? कायरल ड्रग्स की बात करें तो ऑल नेचुरल कंपाउंड्स दैट हैव अ सिंगल एनांसोमेरिक फॉर्म आर कॉल्ड कायरल ड्रग्स। all natural compounds all natural compounds that have a single enantiomeric form are called chiral drugs. ठीक है, all natural compounds that have a single enantiomeric form are called chiral drugs. Chiral drugs क्या होता है? So chiral drugs is basically all natural compounds that have a single enantiomeric form. All natural compounds that have a single enantiomeric form are called chiral drugs. ठीक है, all natural compounds that have a single enantiomeric form are called chiral drugs. All natural compounds that have a single enantiomeric form are called chiral drugs. Chiral drugs क्या होता है? Chiral drugs क्या होता है? All natural compounds that have a single enantiomeric form are called chiral drugs, such as all natural amino acids being L isomer and all natural sugars are D isomer. ठीक है। Chiral drugs are natural compounds that have a single enantiomeric form. All natural compounds that have a single enantiomeric form. ठीक है, all natural compound, ठीक है, so compound that have single enantiomeric form. So all natural compounds that have a single enantiomeric form, all natural compounds that have a single enantiomeric form are called chiral drugs. ठीक है, called chiral drugs. All natural compounds that have a single enantiomeric form are called chiral drugs. ठीक है, such as all natural amino acids. All natural amino acids are L isomer and all natural sugars are D isomer. ठीक है, so all, ठीक है, all amino acids are L isomer और all natural sugars are D isomer. ठीक है, all compounds that have a single enantiomeric form are called chiral drugs. ठीक है, तो अगर जैसे मान लो इसके देखो इसके, ठीक है, सी एच आ गया, सी एल आ गया, इट हैज ऑल्सो सी एच थ्री। ठीक है, तो इसलिए सी एल हो गया और सी एच थ्री हो गया। हाँ भगवान। All natural compounds that have a single enantiomeric form are called chiral drugs, and all natural amino acids are EL isomer, and all natural sugars are D isomer. एग्जाम्पल में ये हो जाएगा। अच्छा, अटॉर्बिसमेरिज्म क्या होता है? अटॉर्बिसमेरिज्म क्या होता है? सही है, अटॉर्बिसमेरिज्म, B A C। अटॉर्बिसमेरिज्म क्या होता है?
पिसोमेरिज्म क्या होता है? एटॉर्पिसोमेरिज्म होता है कि इट इज अ टाइप ऑफ स्टीरियोइसोमेरिज्म दैट अराइजेस ड्यू टू हिंडेड रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड. ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ स्टीरियोइसोमेरिज्म. It is a type of stereoisomation that arises due to a hindered rotation around a single bond. ठीक है, that arises due to a hindered rotation around a single bond. ठीक है. So atorpisomalism क्या होता है? It is a type of stereoisomerism that arises due to a hindered rotation around a single bond. It is a type of stereoisomerism that arises due to a hindered rotation around a single bond. This hindered rotation prevents the free rotation of substituents. This hindered rotation prevents the free rotation of substituents around the bond, leading to the formation of different stable conformation and leading to the formation of different stable conformation. ठीक है, formation of different stable conformations called atorpismerism. Atorpismerism क्या होता है? It is a क्या होता है देखो, it is a type of stereoisomerism that arises due to a hindered rotation out of single bond. ठीक है, it prevents the movement, it prevents the rotation of substituents around a single bond. ठीक है, it prevents the rotation of the substituents around a single bond, uh, which simply means कि uh, क्या करता है ना, रोटेशन सब्सिट्यूएंट्स का रोटेशन को प्रिवेंट कर देता है. तो उससे क्या होता है? स्टेबल कंपाउंड्स बनते हैं. ठीक है, दैट इट दिस इंटर रोटेशन प्रिवेंट्स द फ्री रोटेशन ऑफ सब्सिट्यूएंट्स अराउंड द बॉन्ड, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्टेबल कन्फर्मेशन. ठीक है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्टेबल कन्फर्मेशन. डिफरेंट स्टेबल कन्फर्मेशन called atorpismerism. What is called atorpismerism? ठीक है, बढ़िया बढ़िया है, सब बढ़िया ना, बढ़िया. ठीक है, एटॉर्पिसमेरिज्म क्या होता है? सो इट इज अ टाइप ऑफ स्टीरियोइसोमेरिज्म दैट अराइजेस ड्यू टू अ हिंडेड रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड. ठीक है, ऑब्वियसली this hindered rotation prevents the substituents to rotate around a bond, and leading to the मतलब leading it to the formation of a stable compound. ठीक है, leading to the formation of different stable conformations called atorpismerism. called atorpismerism. ठीक है, अगला है हमारा फिंगरप्रिंट रीजन. ठीक है, बिल्कुल. देखो, फिंगरप्रिंट रीजन क्या होता है? द रीजन बिलो 1500 सेंटीमीटर खत्म. द रीजन बिलो 1500 सेंटीमीटर इनवर्स खत्म. बस, द रीजन बिलो 1500 सेंटीमीटर इनवर्स, that is 1500 centimeter inverse is 600 centimeter inverse, usually contains a very complicated series of absorption. Wow, this is due to all manner of bending vibrations within the molecule. This called as fingerprint region. Wow, that's amazing. इसको मैं थोड़ा याद करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से टू 600 सेंटीमीटर इनवर्स तक होता है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना. दिस द रीजन बिलो ठीक है, fingerprint region का the region below 1500 centimeter inverse, the region below 1500 centimeter inverse to 600 centimeter inverse, या फिर the region below 1500 centimeter inverse, that is a 1500 centimeter inverse to 600 centimeter inverse. ठीक है, ठीक है, मतलब इसके नीचे होता है, मतलब इसी को हम लोग कहते हैं फिंगरप्रिंट रीजन. द रीजन below 1500 centimeter inverse, that is from the 1500 centimeter inverse to 600 centimeter inverse, has contained has
a very complicated series of observation. ठीक है, has very complicated series of observation. The region below 1500 centimeter inverse usually contains a very complicated series of absorption. This is due to the all manner of bending vibrations within the molecule. This is due to all manner of bending vibrations within the molecule. The this is called the fingerprint region. This is called the fingerprint region. Okay. The region below 1500 centimeter inverse, that is 1500 से 600 centimeter inverse, usually contains a very complicated series of absorption. Usually contains a very complicated series of absorption. Usually contains ठीक है a very complicated series of absorption. ठीक है, the region below 1500 centimeter inverse usually contains a very complicated series of absorption. This is due to this is due to all manner of bending vibrations within the molecule. ठीक है, this is due to the all manner of bending vibrations within the molecule. This region is called fingerprint region. ठीक है, this region is called fingerprint region and it contains number of vibrations caused by bending and stretching. कोई लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, fingerprint region can be subdivided into three parts, that is from 1350 से सॉरी 1500 से 1350, क्या 1500 से 1350 और फिर 1350 से 1000, फिर बिलो 1000. ठीक है, ठीक है. देखो, the region below 1500 centimeter inverse usually contains a very complicated series of absorption. This is due to all manner of bending vibrations within the molecule, and this is called fingerprint region. The fingerprint region can be subdivided into three types. Three regions are as follows. Fingerprint region can be subdivided into three different regions. That first one is from 1500 to 350 centimeter inverse, and second one is 1350 to 1000 centimeter inverse, and the last one is 1000 centimeter inverse and below. ठीक है, and below 1000 centimeter inverse. ठीक है, question. Define optical isomerism. Write two examples of organic compound that show optical isomerism. ठीक है, so define optical isomerism. Write two examples of organic compounds that show optical isomerism without chirality and explain each of them. Optical isomerism क्या होता है? तो optical isomerism occurs when two compounds have the same molecular formula and structural formula. Optical isomerism occurs when, देखो, optical isomerism occurs when two compounds have same molecular formula and structural formula. Optical isomerism occurs when the two compounds have the same molecular formula and structural formula but differ in the arrangement of their atoms in space. ठीक है, differ in the arrangement of their atoms, different in their arrangement of atoms. ठीक है, in space. ठीक है, optical isomerism occurs when optical isomerism occurs when two compounds have the same molecular formula and the structural formula but differ in the arrangement of atoms in space. ठीक है, और differ in the direction of rotation of ppl, उसको नहीं लिखूंगा, resulting in non superimposable mirror image. ठीक है, resulting in non superimposable mirror image, resulting in non resulting in non superimposable mirror image. This mirror image isomers are called enantiomers. ठीक है,
ठीक है, आई होप कि बढ़िया होगा। ठीक है ना, बढ़िया एकदम बढ़िया ना, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। So optical isomerism occurs. Optical isomerism occurs when two compounds have the same molecular formula and the structural formula, but different in the arrangement of atoms in space. ठीक है, this results in the unsymmetrical form or something like this results in the resulting in a non-superimposable mirror image. ठीक है, these mirror images are called enantiomers. Sorry, these mirror images are called enantiomers. ठीक है, these mirror images are called enantiomers. ठीक है, एलीन बाइफेनाइल एंड स्पायरो कंपाउंड्स स्पायरेंस। ठीक है, एलीन बाइफेनाइल्स एंड स्पायरेंस। Allenes, biphenyls and the spirines. Allenes, biphenyl and the spirine shows optical isomerism without a chiral center. Optical isomerism occurs when two compounds have same molecular formula and structure formula but differ in the arrangement of atoms in space, or differ in the direction of rotation of ppl, or differ in the direction of rotation of ppl, resulting in a non-superimposable mirror image. These mirror images isomers are called enantiomers. Allenes, biphenyl and spirines shows optical isomerism without chiral center. Optical isomerism in allenes. ठीक है, देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन एलियंस की बात करते हैं हम लोग। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन एलियंस, एलियंस में होता है, बाइफेनाइल्स में होता है और स्पायरेंस में होता है विदाउट अ कायरल सेंटर से ये लोग अपना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, जनरल स्ट्रक्चर सबको पता है, R1। ठीक है, R1 C R2। ठीक है, R1 C R2। अच्छा, R1 डज नॉट इक्वल टू R2 एंड R1 एंड R2 आर डिफरेंट, लोग सबको पता है। अच्छा, इसमें देखो द टू डबल बॉन्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कितना अच्छा बात है ना। द टू डबल बॉन्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर क्रिएटिंग अ नॉन पोलर स्ट्रक्चर। ठीक है, द टू डबल बॉन्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड क्रिएटिंग अ नॉन पोलर स्ट्रक्चर। The two double bonds are perpendicular to each other and creating a non-polar structure. The two double bonds are perpendicular to each other and creating a non-polar structure. It does not have PUS and CUS simple. ठीक है, the two double bonds are perpendicular to each other and creating a non-polar structure. ठीक है, each other creating a non-polar structure. Creating a non-polar structure. So the two double bonds are perpendicular to each other and creating a non-polar structure. The two double bonds are perpendicular to each other and creating a non-polar structure. It does not have, ठीक है, it does not have POS and COS. ठीक है, it does not have POS and COS. And yeah, obviously we can draw structures of this. 1,3 diphenyl propadiene. 1,3 diphenyl propadiene. Like C6H5, C double bond C, H H C6H5 बना लेना, दिस इज मिरर है। ठीक है, इसका नाम क्या है, 1,3 डाई फेनाइल प्रोपेडाइन, 1,3 डाइफेनाइल 1,3 डाइफेनाइल प्रोपेडाइन, PROPATIENE, 1,3 डाइफेनाइल प्रोपेडाइन, 1,3 डाइफेनाइल प्रोपेडाइन।
1,3 डाइफेनाइल प्रोपेडाइन, ठीक है, ऐसे ऐड करो सब। ऑप्टिकल एस्मरिज्म बाइफेनाइल। बाइफेनाइल क्या होता है? बाइफेनाइल आर फॉर्म बाय टू बेंजीन रिंग्स अटैच्ड इन सिंगल सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। क्या होता है? टू बेंजीन रिंग्स अटैच्ड बाय सिंपल सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। बाइफेनाइल क्या होता है? टू बेंजीन रिंग्स अटैच्ड विद द biphenyls are found by two benzene rings attached with a single bond. When biphenyl rings are substituted over ortho, when when biphenyl rings are substituted over ortho ortho position, the carbon atoms in benzene are sp2 hybridized. Thus, rotation around a single bond is restricted. Also, to minimize the steric hindrance, both rings are perpendicular to each other. ठीक है। To minimize the steric hindrance, hindrance, both the rings are perpendicular to each other, ठीक है। To minimize the steric hindrance, the both rings are perpendicular to each other like a POS, ठीक है। POS नहीं है, so it has a lack of POS and CS, and biphenyl side is only like a POS, plane of symmetry. And obviously we can draw like this: A B C D, A B C D. Obviously we then can do that. ठीक है। A B C D मीटर बना लेना, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसे लगा POS, it is like a POS, ठीक है। Also to minimize the steric hindrance, both the rings are perpendicular to each other. When biphenyl rings are substituted over ortho position, the carbon atoms in the benzene rings are respectively hybridized. Thus, rotation around a single bond is restricted. अच्छा। When biphenyls are substituted over ortho position, when biphenyls are substituted over ortho position, when biphenyls are substituted over ortho position, the carbon atoms in benzene rings are sp2 hybridized. Thus, rotation around a single bond is restricted. Rotation around a single bond is restricted, ठीक है। देखो WBS तो क्या होना चाहिए इसका? When biphenyl rings ठीक है। When biphenyl rings are substituted over ortho position,
the the carbon atoms in the benzene ring becomes sp2 hybridized, and that prevent that मतलब 10 रोटेशन और सिंगल बॉन्ड इज रिस्ट्रिक्टेड, 10 रोटेशन और सिंगल बॉन्ड इज रिस्ट्रिक्टेड। मतलब देखो, जब बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पर अगर हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, रोटेशन और सिंगल बॉन्ड इज रिस्ट्रिक्टेड। When biphenyl rings are substituted over ortho position, when biphenyl rings when biphenyl rings are substituted over ortho position, when biphenyl rings are substituted over ortho position, जब बाइफेनाइल रिंग्स को ऑर्थो पोजीशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, पोजीशन द कार्बोनेटम्स इन द बेंजीन आर sp2 hybridized, the carbon atoms in the benzene are sp2 hybridized, the carbon atoms in the benzene, the carbon atoms in the benzene are sp2 hybridized, the carbon atoms in the benzene are sp2 hybridized, the carbon atom the carbon atom in the benzene are sp2 hybridized, the carbon atom साढ़े छः बज गया यार, the carbon atoms in the benzene are sp2 hybridized. So when biphenyl rings are substituted for ortho position, the carbon atoms in the benzene gas sp2 hybridized, thus the rotation of the single bond is restricted. Okay, what is the basic principle of NR spectroscopy? स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, ये क्या हो गया, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, और तीसरा spectroscopy. That will take a lot of time. What is the basic principle of NMR spectroscopy? Explain chemical shielding and deshielding in NMR spectroscopy. ठीक है, NMR spectroscopy, NMR spectroscopy, NMR spectroscopy, NMR spectroscopy, ठीक है ना जी। So question number 3, NMR spectroscopy, the nuclear magnetic resonance. Nuclear magnetic resonance. What is the basic principle of NMR spectroscopy? Such a nuclear magnetic resonance spectroscopy is the study of NMR spectroscopy is the study of interaction of radio frequency electromagnetic radiation with the nuclei of molecules placed in a strong magnetic field. ठीक है, so NMR spectroscopy is the study of what is the basic principle of NMR spectroscopy? प्रिंसिपल लिखते हैं ना, डेफिनेशन कहाँ लिख रहे हैं, सिंपल प्रिंसिपल. What is the principle of NMR spectroscopy? The nuclei carry a charge. This charge spin on the nucleus on the nuclear axis. This is the nuclei. The nuclei carry a charge. This charge spin on the nuclear axis, and this circulation of nuclear charge generates a magnetic dipole along the axis. The nuclei carry a charge. The nuclei carry a charge. The nuclei carry a charge. This charge spin on the nuclear axis. The nuclei carry a charge. This charge spin on the nuclear axis, and this circulation of nuclear charge generates a magnetic dipole along the axis. ठीक है, ठीक है ना, बढ़िया बढ़िया. देखो, द न्यूक्लियर कैरी अ चार्ज, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ
NMR spectroscopy. Principle of NMR. Explain what is the basic principle of NMR spectroscopy. The nuclear carry a charge. The nuclear carry a charge. This charge spin on the nuclear axis, and this circulation of nuclear charge generates a magnetic dipole along the axis. ठीक है। ठीक है ना? ठीक है ना जी? ठीक है ना? एकदम ठीक है। अच्छी बात है। The nuclei carry a charge. This charge spin on the nuclear axis, and the circulation of nuclear charge generates a magnetic dipole along the axis. ठीक है ना? ठीक है ना? हम कब से कह रहे हैं? हम कब से कह रहे हैं आपसे कि ठीक है? ओके। The nuclei carry a charge. 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 This charge spin on the nuclear axis. This charge spin on the nuclear axis. Spin on the nuclear axis. ठीक है। ठीक है। What is the principle of NMR spectroscopy? So the nuclei carry a charge. This charge spin on the nuclear axis, and this circulation of nuclear charge generates a magnetic dipole along the axis. And this circulation of nuclear charge, the nuclei carry a charge. The nuclei carry a charge. This charge spin on the nuclear axis, and this circulation of nuclear charge, and this circulation of nuclear charge, the circulation of nuclear charge, and the circulation of nuclear charge generates a magnetic dipole along the axis. Generates a magnetic dipole along the axis. Along the axis. फिर से the nuclear carry a charge. This charge spin on the nuclear axis, and this circulation of nuclear charge generates a magnetic dipole along the axis. Energy levels for a nucleus with a spin quantum number 1/2. ठीक है। Energy levels for a nucleus. Energy level for a nucleus with spin quantum number 1/2. ठीक है। तो देखो, एनर्जी अगर ऐसे बढ़ रही है हमारी, तो ऐसे ऐसे दिस इज अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज, यहाँ पर m इज इक्वल टू -1/2 हो जाएगा, यहाँ पर m इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ठीक है। ऊपर 1/2 अगर देखो, अगर यहाँ पर हमें चाहिए द न्यूक्लियर कैरियर चार्ज, this charge spin on the nuclear axis, and the circulation of nuclear charge generates a magnetic dipole along the axis. भगवान राम 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 राम। The nuclear carrier charge, this charge spin on the nuclear axis. The nuclei carry a charge. This charge spin on the nuclear axis, and the circulation of nuclear charge generates a magnetic dipole along the axis. Energy levels for a nucleus with a spin quantum 1/2 is this and this. केमिकल शिफ्ट क्या होता है? It refers to the difference between the resonant frequency of spinning protons and the signal of the reference molecule. ठीक है। ठीक है। ठीक है, बढ़िया। एक नंबर ठीक था, तो बढ़िया, एकदम बढ़िया। केमिकल शिफ्ट क्या होता है? It refers to the difference between the resonant frequency of spinning protons. It refers to the
It refers to the difference between the It refers to the difference between the resonant frequency of spinning protons and the signal of the reference molecule. ठीक है? It refers to the difference between the resonant frequency of spinning protons and the signal of the reference molecule. It refers to the difference between the resonant frequency, between the resonant frequency of spinning protons and the signal of the reference molecule. It ठीक है? ठीक है? Yeah, so chemical set. Chemical set basically it refers to the difference between resonant frequency of spinning protons and the signal of the reference molecule. It refers to the difference between the resonant frequency of spinning protons. It refers to the difference between the resonant frequency of spinning protons and the signal of the reference molecule and the signal of the ठीक है. It refers to the difference between the resonant frequency of spinning protons. It refers to the difference between the spinning protons. It refers to the difference between the resonant frequency of spinning protons and the signal of the reference molecule and the signal of the reference molecule. ठीक है. It refers to the difference between the resonant frequency of spinning protons and the signal of the reference molecule. It refers to the difference between the resonant frequency of spinning protons and the signal of the reference molecule ठीक है. सिग्नल ऑफ द रेफरेंस मॉलिक्यूल. ठीक है. It refers to the difference between the resonant frequency of a spinning proton and the signal of the reference molecule. ठीक है. Shielding shifts the absorption of field. Shielding shifts the absorption of field and deshielding shifts the absorption down field. ठीक है. And deshielding shifts the absorption down field and the shielding shifts the absorption upfield. Shielding protons have lower resonant frequency and smaller chemical shift. ठीक है. And the deshielding protons have higher resonant frequency and the shielding होता है. An electron shield the nucleus from external magnetic field. When electrons shield the nucleus from the external magnetic field, the effect of magnetic field experienced by the nucleus is reduced. This causes nucleus to resonate at lower frequency, resulting in a field shift. This called cause nucleus to resonate at lower frequency, resulting in a field shift. ठीक है. एंड shielding क्या होता है? shielding क्या होता है? When electrons shield the nucleus from external magnetic field, the effective magnetic field
The effect of the magnetic field experienced by the nucleus is reduced. This causes nucleus to resonate at lower frequency, resulting in a field shift. ठीक है? When electrons shield the nucleus from the external magnetic field, when electron shield the nucleus from the external magnetic field, the effective magnetic field experienced by the nucleus is reduced. When electron shield the nucleus from the external magnetic field, the effect of the magnetic field on the nucleus is reduced. When electrons shield a nucleus from external magnetic field, the effect of magnetic field experienced by the nucleus is reduced. Okay. When electrons shield a nucleus from external magnetic field, when electrons shield a nucleus from external magnetic field, the effective magnetic field, when electrons shield a nucleus from external magnetic field, ठीक है, when electrons shield a nucleus from external magnetic field, when electrons shield a nucleus from external magnetic field, the effect of magnetic field experienced by the nucleus is reduced. When electrons shield a nucleus from the external magnetic field, the effect of magnetic field experienced by the nucleus is reduced. This causes nucleus to resonate at lower frequency, resulting in a field shift. This called this causes nucleus to resonate at lower frequency. This causes nucleus to resonate at lower frequency, which results in a field shift. Descending क्या होता है? When electron p dying group is present near a nucleus. When electron with dying group is present near a nucleus, when electron with dying group is present near a nucleus, when electron with dying group is present near a nucleus, they pull the electron density away from the nucleus, reducing its shielding. When electron with dying group is present near a nucleus, they pull the electron density away from the nucleus, reducing its shielding. ठीक है? जब भी इलेक्ट्रॉन बिट डाइन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के आसपास, तो क्या करते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन्स जो डेंसिटी होती है उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिससे कि उसकी शील्डिंग कम हो जाती है. ठीक है. ओके ब्रो, गुड नाइट. गुड नाइट भाई. अभी अभी सतीश भी ये भी सो रहे हैं. ओके, डिसाइडिंग वन इलेक्ट्रॉन बिट डाइन ग्रुप इज प्रेजेंट. आज मेरा केमिस्ट्री का एग्जाम है. Electron bit group is present near a nucleus. They pull the electron density. Away from the nucleus, reducing its shielding. Okay. This increase the effective magnetic field experienced by the nucleus. This increase the effective magnetic field experienced by the nucleus. मैथ है. दिस सेकंड शिफ्ट होगा ना. मेरा फर्स्ट शिफ्ट है 10 से 1. When electron beta group is present near a nucleus, they pull the electron density away from the nucleus, reducing its shielding. This increase the effective magnetic field experienced by the nucleus. This increase the effective magnetic field experienced by the nucleus, causing it to resonate at higher frequency. This increase the effective magnetic field experienced by the nucleus, causing it to resonate at higher frequency, resulting in a downfield shift. ठीक है. You can discuss the basic principle of infrared spectroscopy. Explain the different type of molecular vibration taking place in the infrared spectroscopy. ठीक है, अभी थोड़ा बड़ा ही है. चलिए फिर भैया, बेस्ट ऑफ लक अच्छे से एग्जाम के लिए आपको. Discuss the basic principle of infrared spectroscopy. Explain the different types of molecular vibrations taking place in infrared spectroscopy. Explain the basic principle of infrared spectroscopy. तो infrared spectroscopy का जो basic principle है वो क्या है?
At ordinary temperature पर the molecules are generally in their lowest vibrational energy levels. At ordinary temperature, the molecules are generally their lowest vibrational energy levels and vibrating with its natural frequency. Hence, sufficient amount of energy in the form of infrared radiations equal to difference between two vibrational levels. ठीक है, when sufficient amount of energy in the form of an infrared radiations equal to the difference between two vibrational levels is applied to the molecule, and when the natural frequency of the molecule becomes equal to the radiant frequency, and when the natural frequency of the molecule and when the natural frequency of the molecule equal to the radiant frequency, then the absorption takes place and the absorption condition occurs. When the natural frequency of the molecule becomes equal to the radiant frequency, then the absorption takes place and vibration transition occurs. When the natural frequency of the molecule becomes equal to the radiant frequency, when the natural frequency of the molecule becomes equal to the radiant frequency, then the absorption takes place and vibrational transition occurs. Then the absorption takes place and the vibrational transition occurs. Then the absorption takes place criteria for a compound to absorb infrared radiation. Criteria for a compound to absorb infrared radiation. Criteria for a compound to absorb infrared radiation. The two essential criteria for a molecule to be infrared active are the two essential criteria for a molecule to be infrared active are: first one is the correct wavelength of radiation, second is the change in dipole moment. First one is the correct wavelength of radiation, second one is the change in dipole moment. Molecular vibrations क्या होता है? Due to increase in vibrational and rotational energies of the molecule, two types of fundamental vibrations are observed. Due to increase in vibrational and rotational energies of the molecule, two types of fundamental vibrations are observed. Due to increase in vibrational and rotational energies of the molecule, two types of fundamental vibrations are observed. First one is stretching vibrations, second one is the bending vibrations. Stretching vibrations क्या होता है? These are the vibrations of oscillation along the line of bond. ठीक है, these are the vibrations along the line of the bond. In stretching vibrations, these occurs a change in bond length. In stretching, ठीक है, these are the vibrations.
Gcash TVRRG. Welcome to our stream. Bye. Yes. Okay. जी जी, पता है भाई, थैंक यू। आई नो ब्रो, थैंक यू।
CH3 CH2 MgBr प्लस CH3H2, ठीक है। H2OH प्लस के प्रेजेंट CH3 CH2 OH बना लेगा प्लस में MgBr OH से बाहर निकल जाएगा। CH3 की बात करें MgBr MgBr OH से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, बढ़िया।
जी आयुष जी, वेलकम टू आवर स्ट्रीम। अभी पढ़ रहा हूँ भाई।
Okay, everyone. So we have just completed our today's target of 3 hours of study. I hope you have also completed the your target with me. So let's end this stream here. Bye bye. Good night. Good morning. Have a nice day. Bye bye.